बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है मैनेजरियल अकाउंटिंग, यूनिट 2, कॉस्टिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स। आज हम इस यूनिट 2 के प्रोग्राम कॉस्टिंग ऑफ जॉइंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं क्या, इससे रिलेटेड डिफरेंट की टर्म्स क्या हैं और जॉइंट कॉस्ट को अपॉइंटमेंट करने के कितने मेथड्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सम कंपनीज engage in multiple production processes to manufacture a variety of products, while other companies have a single process that simultaneously generates different outputs, like chemical companies, petroleum refineries, flour mills, coal mines, dairies, meat packers, and several other products which produce in manufacturing or conversion processes a multitude of products. All such merchandise so created or originated are classified as joint products. Here are some important key terms which need to understand before understanding the allocation of joint cost to different products. Joint products are those products which produce resulting from a process with a common input. कि प्रोडक्शन प्रोसेस सिंगल हो, लेकिन उसके नतीजे में अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हों तो उन प्रोडक्ट्स को हम जॉइंट प्रोडक्ट्स कहेंगे। स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर जॉइंट प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाती हैं, उससे पहले का जो प्रोसेस है वो कॉमन प्रोसेस कहलाता है और उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो सेपरेट प्रोसेस कहलाएगा और उसकी कॉस्ट सेपरेबल कॉस्ट कहलाएगी। जॉइंट कॉस्ट, कॉस्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रायर टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जितनी कॉस्ट अक्कर होगी वो कॉस्ट हमारी जॉइंट कॉस्ट कहलाएगी। देन वी हैव फाइनल प्रोडक्ट्स। फाइनल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर रेडी फॉर सेल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। कि अब इन प्रोडक्ट्स पर मज़ीद कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का मटेरियल या लेबर वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। These are ready for sale, are known as the final product. Whereas अगर प्रोडक्ट्स पर सेल से पहले मज़ीद वर्क रिक्वायर्ड हो, कुछ मटेरियल ऐड करना हो या लेबर प्रोसेस रिक्वायर्ड हो, तो वो प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं और इस इन्वेंट्री को हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी कहते हैं। Dear students, as you are viewing on the screen, here is a pictorial image which describes the joint production process. कि एक joint input है और joint production process के ज़रिए different products हमारे पास आती हैं जिनमें ऑयल एंड गैसोलीन है। अब अगर इन प्रोडक्ट्स पर मज़ीद वर्क रिक्वायर्ड हो तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहलाएंगी और अगर इन्हें ऐसे ही सेल कर दिया जाए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही तो यही प्रोडक्ट्स हमारी फाइनल प्रोडक्ट्स कहलाएंगी।
but here we incurred separate processing cost to increase the market value of these products and sold after some separate processing. So these are now known as final products. Dear students, now we have to make decision whether to sell products at the split off point or after processing or after incurring some additional cost. अब इस बात का फैसला कैसे किया जाएगा कि हम प्रोडक्ट्स को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर एज इट इज़ सेल कर दें या मज़ीद कॉस्ट इंकर करने के बाद उसको सेल करें. सो डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स कॉस्ट इंकर्ड प्रायर टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर संक कॉस्ट. स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जितनी कॉस्ट आप अक्कर करेंगे, जिसे हम जॉइंट कॉस्ट भी कहते हैं, वो संक कॉस्ट कहलाती है. और संक कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग करते हुए कंसीडर नहीं किया जाता. अ प्रोडक्ट should be processed beyond the split off point only if the incremental revenue exceeds the incremental processing cost. कि आपकी जो incremental revenue है वो exceed कर जाती है incremental processing cost से, then we will incur further processing cost and sold after adding material, labor and so on, whatever is required. So the key point is that value is added only if the incremental value from processing exceeds the incremental processing cost. अगर incremental revenue incremental processing cost से increase कर जाती है, तब हम ये फैसला करेंगे कि हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करने के बाद इसे सेल करेंगे. अदरवाइज हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही जॉइंट प्रोडक्ट्स को सेल कर देंगे. हियर इज एन एग्जांपल कि सॉ मिल इनकॉर्पोरेशन कट्स लॉग्स फ्रॉम विच अनफिनिश्ड लूम्बर एंड वुड चिप्स आर द जॉइंट प्रोडक्ट्स. अनफिनिश्ड लूम्बर इज सोल्ड एज इट इज or process further into finished lumber. In the same way, we have to make decision wood chips can also be sold as is for landscaping or processed further into 4x8 composition boards. Here we have sales value at the split of point lumber $140 and wood chips $40. Sales value after further processing $270 and for wood chips we have to incur $50. Allocated joint product cost $176 and $24. Cost of further processing $50 and for wood chips we have to incur $20. So here is an example, and now we have to make decision whether to incur further cost or sell at the split off point. So let we solve it. Sales value after further processing, कि अगर उसको further process करने के बाद हम सेल करते हैं तो we will get $270 and $50 for lumber and wood chips respectively. और अगर split of point पर ही सेल कर देते हैं, we will get $140 and $40 respectively. So incremental revenue will be for lumber $130 and for wood chips $10. Cost of further processing we have to incur $50 for lumber and $20 for wood chips. So in this way we will get profit from the lumber if we
process it further and then sell. But in case of wood chips, we will have to bear loss of $10 if we incurred further processing cost and then sell. So dear students, should we process the lumber further and sell the wood chips as is? So इस एग्जाम्पल में जब हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा रिसीव हो रहा है इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट से, तो उस सूरत में हम इसे फर्दर प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज़ हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही उसे सेल कर देंगे. नाउ here is another aspect we have to learn, joint cost allocation methods. कि joint products प्रोड्यूस होने के बाद जो joint cost है उसे कैसे allocate किया जाएगा. We have two different methods. First one is physical measure method and the second one is monetary measurement method. Physical measure method में joint costs are allocated based on proportional measures. उसकी weight की basis पे, उसके volume की basis पे, उसके numbers की basis पे हम joint cost को allocate करते हैं before the split of point जो cost हमारी occur हुई है. जबकि monetary measure method में we allocate on the basis of their respective values. जो उनकी मार्केट वैल्यूज़ हों उनकी बेसिस पे हम जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं. तो दिस मेथड इज़ नोन एज मॉनिटरी मेजर मेथड. हेयर इफ वी एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एनिमल टू द टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन वेट, which product would receive the larger cost allocation? Hamburger, because there is more of it. अगर हम क्वांटिटी की बेस पर एलोकेट करें तो ऑब्वियसली जो हम बर्गर है उसका वेट ज़्यादा है, उसको हम ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट करेंगे. बट इफ़ वी एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ रेजिंग द एनिमल to the two products based on sales value, would the steak receive a greater portion of the cost allocation? Yes, because steak has a higher sales value than hamburger. So we must carefully choose the appropriate method, which method we have to use to allocate the joint cost to different products. So let's have a look at an example illustrating the joint cost allocation method. If products require further processing beyond the split of point before they are marketable, it may be necessary to estimate the net realizable value. कि जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हम अक्कर करते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, वो कॉस्ट फाइनल सेल वैल्यू से माइनस की जाएगी. दिस विल बी नोन एज द नेट रिलाइजेबल वैल्यू, और इसको इन शॉर्ट हम NRV कहते हैं. सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल कि वी इंकर्ड जॉइंट मटीरियल $275,000, जॉइंट conversion cost $225,000 into a common production process. इस common production process के नतीजे में we got two different main products, oil and gasoline. After further processing cost, that is separable processing cost, we sold to ultimate sales value 5 lakh, and for the second product we sold it for $12 lakh. So let we see how to allocate the joint production process cost to
these two different products. Here we have sales value for oil 5 lakh, gasoline 12 lakh. In this way, we have total sales value of these two products 17 lakh. We will deduct the additional processing cost to get the estimated NRV. And after deducting the additional processing cost, we will get NRV for oil 3 lakh and gasoline 7 lakh. So total NRV is 10 lakh. Now we will calculate the proportionate value to allocate the joint production cost to these two products. We have proportionate share 30% for oil and 70% for gasoline. We have 5 lakh joint production cost, which come from 2,75,000 joint material plus 2,25,000 joint conversion cost. So we will allocate 30% joint cost to oil, that is 1,50,000, and 70% of joint cost to gasoline based on their market value. So in this way, based on the monetary Muneer method, we will allocate joint cost to different products. The next method is physical Muneer method. In physical Muneer methods, when output product prices are highly volatile, अगर आपकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, चेंज होती रहती हैं, फिर आप फिजिकल Muneer मेथड यूज़ करेंगे. Further, many additional processes occur between the split off point and the final point of marketability. Means कि before the split off point कम process required होता है और after the split off point ज़्यादा आपको cost bear करना पड़ती है, incur करना पड़ती है. उस सूरत में भी आप physical Muneer method यूज़ करेंगे. Third condition is market prices are unavailable for products provided via cost plus contracts. कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती हैं कि कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज पर आप उन्हें सेल करेंगे, और चूँकि अभी आपने कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की होती, इसलिए आप मार्केट वैल्यू भी उसकी कैलकुलेट नहीं कर पाते. सो इन शॉर्ट, अगर मार्केट वैल्यू अनअवेलेबल है, उस सूरत में भी आप फिजिकल Muneer मेथड यूज़ करेंगे. Now let's see कि we produced 2,40,000 gallons oil and 3,60,000 gallons gasoline from a joint production process, and we incurred 2,25,000 joint conversion cost and joint material cost 2,75,000. So let me review how to allocate joint product cost based on physical Muneer method. अब 2,40,000 gallons हमें ऑयल का रिसीव हुआ है, जबकि 3,60,000 gallons we produce of gasoline. So if we calculate proportionate share, 40% belongs to oil, whereas 60% belongs to gasoline. So we will charge 5 lakh joint cost, 40% to oil, that is $2 lakh, and 60% to gasoline, that is $3 lakh. In this way, we will allocate the joint production cost to these two products using the physical Muneer method. So dear students, आज हमने costing of
जॉइंट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ये सीखा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं क्या और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, किस तरह डिसीजन किया जाता है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर हम गुड्स को सेल करें या स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अक्कर करने के बाद हम उनको सेल करें। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।